So in these slides, we'll talk about DNA, structure of DNA, and where the DNA is found in the cell. What is DNA? DNA is the deoxyribonucleic acid. DNA is made up of different monomers. DNA is actually a polymer that is made up of different monomers, which are called nucleic acids or nucleotides. These are linked together in the long chains. These monomers are made up of sugar, deoxyribose in DNA, a nitrogenous base, and a phosphate group. DNA is a molecule that carries the genetic information used by the organisms for their growth, development, functioning, and reproduction. So these are the building blocks of DNA. Here you can see these are pyrimidines. Pyrimidines include cytosine and thymine and uracil, and purines include guanine and adenine. These are the pyrimidines are single-ringed nucleic acids or nitrogenous bases, and the purines are double-ringed nitrogenous bases. These are the phosphate groups, which are actually the backbone of the DNA, phosphate groups and deoxyribose. And here you can see at carbon number 2 prime, the oxygen is missing in the deoxyribose, but that is present in the ribose. Ribose is present in the RNA, and deoxyribose is present in the DNA. And this is if there is the nitrogenous base and sugar present in the absence of phosphate group, that is called nucleoside. And if the phosphate group is also present in the nucleotide, with the sugar and nucleotide and nitrogenous base, that is called a nucleotide. So न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन बेस तीनों प्रेजेंट होते हैं, और अगर उसमें फास्फेट ग्रुप मिसिंग हो तो दैट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. एंड दीज आल मेड टुगेदर डिफरेंट चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मेक न्यूक्लिक एसिड्स. Then the structure of DNA. तो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में on 25th April 1953 they came up with this DNA model, structure model, that was published in Science and Nature journal. So they said that DNA is a double-stranded, double helical molecule, जो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी जो बैकबोन है दैट लुक्स लाइक अ लैडर और स्टेयर. इसकी बैकबोन जो है दैट इज मेड अप ऑफ, या आप कह लें कि इसके आर्म्स जो हैं दोज आर मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर, और इसके जो स्टेप्स हैं दोज आर मेड अप ऑफ दिस नाइट्रोजनस बेसिस. एंड A always complement with the T, and G always complement with the C, and this is also called the complementarity rule, कि A हमेशा जो T के लिए कोड करेगा और G हमेशा जो C के लिए कोड करेगा. और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स हैं, ये एंटी पैरेलल हैं. इनमें से एक स्ट्रैंड जो है उसको सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, जो कि 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, दैट इज फ्रॉम 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड. So these two strands are held together by the pairing of complementary nucleotide bases on the opposite DNA strands. So I have already talked about this pairing rule, this complementarity rule. So pairing allows the molecule to replicate itself accurately. तो जो replication होती है वो भी ये कम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग रूल के तहत होती है, और जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो भी इसी के तहत होती है, कम्प्लीमेंटरिटी रूल के तहत. और जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है उसमें भी
जो कोडॉन्स हैं वो कोड करते हैं फॉर एंटीकोडॉन्स एंड अमाइनो एसिड्स जो है वो एक दूसरे से जो है वो बनाते हैं ऑन द inside the ribosome and the so this is different characteristics of DNA. ये आप देख लेंगे जो डिस्टेंस है बिटवीन टू पेयर्स, यहाँ भी ये जो टू पेयर्स हैं इनको रंग्स भी कहा जाता है। तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। और एक आप कह लेंगे टर्न है डीएनए की, उसमें ये मेजर ग्रूव आपको नजर आ रहा है, ये माइनर ग्रूव है, तो ये एक टर्न है डीएनए की। इसके अंदर 10 रंग्स जो हैं या पेयर्स जो है मौजूद होते हैं, तो इसका साइज जो है वो 3.5 नैनोमीटर होगा। और डीएनए की विड्थ तो जो है वो मोस्टली 2 नैनोमीटर होती है। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग आप देख लें कि गुआनिन जो है हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है बनाता है साइटोसिन के साथ, और थाइमीन जो है वो हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एडेनिन के साथ। So this also shows the complementary base pairing of these guanine with the cytosine and thymine with the adenine. So this is the mechanism of gene expression, जिसको हम सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रीफली मैं आपको बता दूँ दैट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA to RNA through the process of transcription and from RNA to protein through the process of translation. और यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन का एक वो देख रहे हैं, एक एनिमेटेड मूवी जो है ट्रांसक्रिप्शन की देख रहे हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन कम्प्लेक्स जो है वो लगा हुआ है डीएनए के साथ, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आ रहे हैं और इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो इसी कम्प्लेक्स से बाहर जो है वो निकल रहे हैं। तो इसके बारे में हम सेंट्रल डॉगमा या जीन एक्सप्रेशन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे बाद में आने वाले वीडियोस में। So where the DNA is found, mostly DNA is found in the nucleus in case of eukaryotes, and inside the cytoplasm in case of prokaryotes. In case of prokaryotes, the DNA is hanging in the cytoplasm in the form of plasmid. So in eukaryotes, like in animals, the DNA also present in mitochondria, and in plants the DNA is also present in the chloroplast. So interestingly, you will be astonished to know that on an average the humans are 99% biochemically similar to each other. So they are 99%, जो DNA है वो 99% सिमिलर है सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका आपस में। सो जो डिफरेंस है जो आपको नजर आता है देखने में, वो डिफरेंट जो है वो सिर्फ 1% डीएनए जो वो कोड करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डीएनए structure and where the DNA is found.